Bismillahirrahmanirrahim. Very good evening, ladies and gentlemen, and my special regards to all the heroes. I'm really thankful and honored that the lady or the program organizers, as Mr. Dr. Ali Nawaz, the Snow Leopard Foundation, and another organization like Illegal Wild Life Fund and DevCom, and of course to my great brother Mr. Jamal Laghari, who is a great ambassador for the wildlife of Pakistan. I think they all need a round of applause. But other than that, I would really like to say that today I'm honored that you have said that I'm the chief guest, but I think the actual chief guests are those heroes though had played on their life, they put their life on the risk and they have saved. So I think they are the chief guest and they need the round of applause. मेरे लिए वो तमाम तर वो हमारे नौजवान भाई जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों पे खेल कर जो जिस तरह से जानें बचाई हमारे इन उसमें तमाम चीज़ों पर काम भी किया अपनी जान का नजराना लगाते हुए. So I think they are आप लोग मुस्तहिक हैं. But getting back to the subject, I really want to say thanks, of course, all the distinguished and esteemed colleagues, guests, honorable awardees, friends of the wildlife conservation, good evening once again. For me, it's a great privilege to be over here, to stand before you and for this great occasion and to gather over here and to celebrate. Yes, it's a great moment to celebrate, where those people like though have played a great, because I believe these rangers or these people are actually those people though play a great pivotal role. But at the same time, I would really like to acknowledge those organizations who are working for a great cause. Because everybody knows that, of course, I'm dealing with the climate change, but I believe that every single thing is related to the climate change. Of course, when we talk about the snow leopards, or when we talk about any species, when we talk about the birds, when we talk about anything, I think everything in the world which has been created by a God, of course, that means a lot. So I would like to extend my heartfelt thanks to all of you, to our esteemed, of course, partners, as I've already mentioned. So today, of course, we recognized over here the 6 exemplary wildlife protectors from Khyber Pakhtunkhwa, Azad Jammu and Kashmir, and Gilgit-Baltistan. I think these individuals have shown extraordinary courage and dedication in protecting our precious wildlife and nature habitats. Their efforts remind us of the crucial role that each of us plays in preserving the biodiversity that sustain our ecosystem. These awards are not merely token of appreciation. They symbolize our collective resolve to support and honor those who stand at the forefront of conservation. We acknowledge the sacrifices and tireless efforts of our rangers. Their work ensures the survival of species that are not only vital to our environment, but also hold significant cultural and economic value for our communities. Ladies and gentlemen, we are also privileged to witness the premiere, The Silent King of documentary that brings the light the majestic yet elusive snow leopard. This film is a testament of the importance of our efforts in preserving these magnificent creatures and their habitats. The honor of hosting an exhibition of photographs by the wildlife ambassador, Senator Sardar Muhammad Jamal Khan Laghari. His work captures the beauty and diversity of our wildlife, inspiring us to appreciate and protect the natural wonders that Pakistan is blessed with. As we all celebrate these achievements, let us not forget the challenges that lie ahead. Climate change poses a significant threat to our ecosystems and the wildlife inhabit them. It is imperative that we continue to strengthen our conservation efforts and work collaboratively to mitigate an impact of climate change. In the end, ladies and gentlemen, I would like to once again congratulate to our awardees. And I just wanted to, with excuse, I want to talk in Urdu as well, because I believe that I have spoken a few words in English, but I wanted to talk into Urdu, which is my national language, and I want everybody to understand that. I think today, जब हम आज की बात करते हैं climate change की, ecosystem की, snow leopards की, of course, that is something, it's huge and massive. We all need to work. हम सबको एक साथ मिलकर
के काम करना है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब हम बात करते हैं इन स्पीशीज़ की, हम बात करते हैं ग्लेशियर्स की, हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को हमने किस तरह से देखना है, कैसे करना है, उसमें छोटे छोटे स्टेप्स भी बहुत बड़ा मायने रखते हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं अपने इन तमाम तर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो तमाम तर चेहरे जो कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में या कहीं बड़ी बड़ी जगहों पर हैं वो तो नज़र आते हैं, लेकिन ये वो हीरो जो अपनी जानों पर खेल के अपने फ़र्ज़ को अंजाम देते हैं, क्योंकि उस टाइम इनके फ़र्ज़ और उनके काम के बीच में तो शायद कोई देख रहा होता है नहीं होता, लेकिन उनकी जो एहसास ज़िम्मेदारी है मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे लोगों के लिए। और आज यहाँ इस फोरम से आई वॉन्टेड टू ब्रिंग इन योर नॉलेज ऑफ एवरीवन कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन की तरफ से हम लोग जो स्नो लेपर्ड है, मैं बल्कि उसमें तमाम तर लोगों का साथ चाहूँगी कि स्नो लेपर्ड जो है उसको हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज एनिमल, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे जैसे थैंक यू, जैसे जैसे ग्लेशियर्स जो हैं मेल्ट हो रहे हैं, बिकॉज वी ऑल नो वी कॉल इट स्नो लेपर्ड के बर्फ़ का शेर। सो जो बर्फ़ में रहने वाला एक शेर है उसको जब बर्फ़ नहीं होगी तो वी ऑल अंडरस्टैंड दैट हाउ इट गोना सर्व, उसमें सर्व किस तरह से वो करेगा, वो कैसे सफ़र करेगा, क्या हालात होंगे। इट्स नॉट ओनली दैट, देयर इज़ सो मैनी थिंग। जैसे हम सब जानते हैं कि एक छोटी से छोटी चूंटी भी जो है वो हमारे रब की ज़ात ने किसी ना किसी मकसद के लिए बनाई है। वो इकोसिस्टम में किस तरह से वैल्यू रखती है, चाहे वो फिर शहद की मक्खी हो, चाहे वो कोई जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, पहाड़ हो, बर्फीले हमारे जैसे केटू हो, तमाम तर ग्लेशियर्स। सो आई जस्ट वांटेड टू इन द एंड अगेन फॉर द foreign dignitaries who are sitting over here, so I just wanted to bring in everybody's knowledge that we are from the Ministry of the Climate Change, we are going to declare the snow leopard the animal of the climate change and for the glaciers. So with this note, I would really like to thank everybody, all the partners, all the stakeholders, and I would really once again want to thank Mr. Jamal, Senator Jamal Laghari Sahab, and the organization, the efforts, and that was the passion which today I've seen. And when we met in the first meeting, I saw this in man, and I believe that the way in your photographers, in your photo shoots and photos, it's not only that. Uske piche there is a history of that how this man go in the like all माउंटेन्स और कहाँ से जाके वो किस तरह की तस्वीरें लेते हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान के लिए आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मैं समझती हूँ आप भी काबिल तहसीन हैं। और मेरा रब आपको और तमाम तर उन लोगों को जो इस काम में आगे बढ़ रहे हैं मुल्क की बका के लिए, बेहतरी के लिए, और मुल्क को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअली यू ऑल आर द चैम्पियंस। मे अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस इवनिंग, थैंक यू सो वेरी मच।